दिस वीडियो कैन मेक यू सुपर डिसिप्लिन। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, बट ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मैं देने वाला हूँ विच इफ यू अप्लाई इन योर लाइफ यू कैन गेट दैट डिसिप्लिन। आई थिंक इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट, बट शायद इंडिया हैज़ नॉट गॉट डिसिप्लिन। अगर ये क्वालिटी आप में आ गई, you can become a winner. You can become a big success in whatever area which you're doing, be it in your business, your profession, as a student, as a homemaker. जो भी आप कर रहे हो, अगर डिसिप्लिन आ गई, you can become a grand success. दोस्तों, सबसे पहले why I am doing this particular video. See, if I am not disciplined, I don't have any right to do this particular video. कि खुद क्या कर रहे हो? Are you disciplined? Let me give you some context of where I am disciplined in my life. For example, I read Think and Grow Rich or a similar book every single day, a little bit of that every single day for the last 7 years. लास्ट 7 साल से इनफैक्ट थिंक एंड ग्रो रिच तो रेगुलरली मैं पढ़ता रहता हूँ. सो दैट इज वेयर आई एम डिसिप्लिन. आई एम रियली स्टार्ट टू गेटिंग द रिजल्ट्स. आई कैन रियली स्टार्ट टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच. और एक एरिया वेयर आई एम सुपर डिसिप्लिन विच आई कैन शेयर राइट नाउ इज every single day since last more than 1 year, from Diwali 2022 Monday to Saturday, I am coming live on Zoom session at 6:30 a.m. for 20 minutes for daily priming. Daily priming, I will get the link over here, is something which we do every single day. ये completely free है. Every single day getting up and being there, showing up live at 6:30 a.m. That is where I am disciplined. Now I have got the right because I am doing this since last so many years. इसीलिए I am going to share with you what is discipline and how you can get this quality of discipline which has made me a grand success. So let's start. पहले समझते हैं what do you mean by discipline. Discipline is the ability to give yourself a command and follow it. I repeat, ये classic definition दिया बॉब प्रॉक्टर ने. Discipline is the ability टू गिव योर सेल्फ अ कमांड. आप अपने आप को एक कमांड देते हो और वो कमांड फॉलो करते हो. सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मॉर्निंग में आपका फोन का अलार्म बजा एंड यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग. इट इज अ कमांड विच इज बीइंग गिवन टू यू. क्या आप उठते हो फ्रॉम द बेड? इफ येस यू आर डिसिप्लिन. इफ नॉट, ओ एक स्नूज, सेकेंड स्नूज, थर्ड स्नूज, अरे कहाँ आधा घंटा चला गया. यू आर नॉट डिसिप्लिन. वन मोर एग्जाम्पल, जब भी आप अपना डाइट प्लान बनाते हो कि आज से मिठाई बंद, आज से स्वीट्स बंद, आज से चॉकलेट बंद, आज से फ्राइड फूड्स बंद, क्या आप फॉलो करते हो? आज से जंक फूड बंद, क्या आप फॉलो करते हो? इफ येस, इट्स अ कमांड विच यू आर गिविंग टू योर ओन सेल्फ. अगर आप फॉलो करते हो, यू आर डिसिप्लिन. इफ नॉट, यू आर नॉट डिसिप्लिन. एज सिंपल एज दैट. मेनी एग्जाम्पल, लेट्स से स्मोकिंग का एडिक्शन है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन है. कितनी बार हम प्रॉमिस करते हैं कि कल से कर देंगे, लेकिन कभी होता नहीं बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिन इन लाइफ. वन मोर एग्जाम्पल जहां पे डिसिप्लिन आप बहुत ट्राई करते हो लेकिन होता नहीं है. सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन. कितनी बार कितने ऐप्स आपने डाउनलोड किए, कितने सब टाइमर्स लगाए कि बस 10 मिनट, लेकिन वो डिसिप्लिन रहता नहीं है. दीज आर द एरियाज वेर यू नीड टू चेक कि यार डिसिप्लिन ही तो चीज़ है. आई एम बीइंग इनडिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन आ गया तो डेफिनेटली आई कैन स्टार्ट टू गेट दैट रिजल्ट्स. सी, डिसिप्लिन इज अ हैबिट आपको बिल्ड करनी पड़ेगी. और जैसे आपने हैबिट बिल्ड की, डिसिप्लिन विल बी देयर विद इन यू. इनफैक्ट आई वुड से दिस वे दैट डिसिप्लिन शुड बी एन अनकॉन्शियस हैबिट. वो कॉन्शियस डिसिप्लिन इज वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन अगर डिसिप्लिन को आपने अनकॉन्शियसली कर दिया, हैबिट सारी अनकॉन्शियस ही होती है. सो व्हेन यू मेक डिसिप्लिन लाइक अ रियल अनकॉन्शियस हैबिट, इट कैन रियली स्टार्ट टू गेट यू द रिजल्ट्स. यू कैन बिकम अ गोल अचीवर, यू कैन बिकम अ सुपर अचीवर, यू कैन बिकम अ चैंपियन इन वॉट एवर एरिया विच यू आर परस्यूइंग अक्रॉस. So make discipline as an unconscious habit for yourself where you don't need to push in so efforts. Why? Willpower fatigue. विल पावर आप बहुत यूज करेंगे, बहुत स्ट्रेस आएगा और विल पावर आपका डिप्लीट होते जाएगा. लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपने डिसिप्लिन को एक ऐसी हैबिट डाल दी कि मैं डिसिप्लिन हूं, दैट रियली स्टार्ट्स टू क्रिएट दैट डिसिप्लिन विदाउट एनी एफर्ट्स. दैट्स व्हाट वी कॉल एज एफर्टलेस एफर्ट और बीइंग इन द फ्लो स्टेट. समझते हैं कैसे? अंडरस्टैंड दिस. हैबिट्स बहुत सारी होती है हमारे पास, बट देर आर सम हैबिट्स विच वी कॉल एज की स्टोन हैबिट्स. What are these keystone habits? Keystone habit ऐसी habit है कि ये बुनियाद है. They are the pillars, they are the foundation which controls all other habits. तो अगर आपने keystone habit बना दी आपकी discipline को, that can control other habits, it can have a ripple effect. So make discipline as a keystone habit.
डिसिप्लिन और आपके ब्रेन में बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। सी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या बोलती है कि आप अपने एफर्ट से आपके न्यूरल पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, इफ यू टेक इनफ एफर्ट्स, यू कैन बिकम डिसिप्लिन। इट्स ए वेरी गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ है। आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन बनना है, आप कर पाएंगे क्या? नो, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है। इट इज नॉट डिसिप्लिन imposed by others, that will not last. Self discipline has to come from within, and when you use these patterns of self discipline, your patterns in your brain will start to change. Neuroplasticity has shown कि जो भी लोग डिसिप्लिन होते हैं उनके ब्रेन पैटर्न्स अलग तरीके से काम करते हैं, अलग तरीके से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, US Navy SEALs, if you look at this US Navy SEALs, they are extremely disciplined. एक ऐसे ट्रेनिंग से गुजरते हैं, कमांडो ट्रेनिंग से गुजरते हैं, एंड दे गेट दिस क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन। उनके ब्रेन पैटर्न्स आर कंप्लीटली डिफरेंट देन इफ यू सी अ नॉर्मल पर्सन हु इज नॉट गॉन थ्रू दैट एक्सट्रीम ट्रेनिंग, एक्सट्रीम डिसिप्लिन। सो ये सारी पैटर्न्स आप समझेंगे कि जैसे मैं डिसिप्लिन बनता हूँ, मेरे ब्रेन पैटर्न्स चेंज हो सकती है, और अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, इफ आई चेंज माई ब्रेन पैटर्न्स, आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट टू बिकम मोर डिसिप्लिन। सो लिंकेज ये है, जैसे ब्रेन पैटर्न्स को आपने चेंज किया, न्यूरोप्लास्टिसिटी को अप्लाई किया, यू कैन बिकम डिसिप्लिन इवन इफ यू आर नॉट हाईली डिसिप्लिन राइट नाउ। इवन इफ यू आर हाईली इनडिसिप्लिन, you can become disciplined by changing your brain patterns. I want to share with you 5 super practical tips which you can practice from today to start to become more disciplined. The first tip is mindfulness. Yes, my friends, practice some kind of meditation every single day. I have been to Vipassana for two times. मैंने एक बढ़िया सा वीडियो भी बनाया है, you can check out on my YouTube channel where I explain to you why you should go for Vipassana. जब भी आप 10 दिन का Vipassana कोर्स करते हो, you are in the deep meditative state. You can try any other kind of meditation also, maybe Thratak, maybe dot gazing, maybe candle gazing, any other meditation. But this mindfulness technique से आपको definitely आपको discipline help करेगा। कैसे? See, when you are being mindful, when you are in the deep meditative state, आपका जो prefrontal cortex है, this part of the brain becomes much more denser. आपका जो gray matter है, this particular area is much more denser, and this is proved by MRI scans. जो लोग before meditation and after meditation check करते हैं, for example people going for a 10-day course, उनके पहले MRI scan check करते हैं, और after the course is completed, बाद में उनका MRI scan करते हैं, it's a complete drastic change in their brain patterns. फर्दर आपका जो अमाइगडाला है, अमाइगडाला इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज लाइक अ रिएक्शन पार्ट, जो आप रिएक्ट करते हो, जो आपके इंस्टिंक्ट्स होती है, जो आपके ड्राइव्स होते हैं, जो आपके बेसिक इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, गुस्सा होते हो, दैट पर्टिकुलर एरिया स्टार्ट्स टू श्रिंक, वो छोटा होता रहता है यूजिंग द पावर ऑफ माइंडफुलनेस. सो हाईली रिकमेंडेड ड्यूरिंग योर एंटायर 24 आवर्स प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ मेडिटेशन. अगर कुछ नहीं हो सकता है तो 10 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आनापाना मेडिटेशन करिए, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है. एंड रियली स्टार्ट टू डेवलप दिस माइंडफुलनेस. इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम डिसिप्लिन. बीइंग फोकस, बीइंग मेडिटेटिव, practicing mindfulness is the first step to become disciplined. The second tip is the 40% rule. The 40% rule is a technique which is followed by the Navy SEALs. और ये टेक्निक क्या बोलती है? That 40% means कि जब भी you feel you are reached your level, you are reached your full capacity, कि अभी तो मेरे से काम नहीं हो पाएगा. Maybe if you are in the gym, कि अभी मैं एक भी rep नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं कोई भी पुशअप नहीं कर पाऊंगा, बस मेरी कैपेसिटी हो गई है. Maybe if you are running a marathon, कि यार अभी मैं कुछ आगे भाग रही, एक कदम में आगे बढ़ नहीं पाऊंगा. At that time, what the Navy SEALs say, that it is just 40% of your capacity which you have reached. That means almost 60% of your potential is still there. जो आप में क्षमता है वो आपने यूज ही नहीं की है. And when you start to go to that extreme level, you push yourself harder, you do something more, you push that extra push-up, you do that extra rep, you run that extra kilometer, you complete that full marathon. That is where you start to get that discipline, because yes, आपने वो potential आपका यूज किया. So that's the second tip. Practice that 40% rule. When you think of giving up, नहीं, hold on, I've just reached my 40% threshold, और 60% मेरे पास कैपेसिटी बाकी है. That's the second tip. The third tip is the box breathing technique. This box breathing technique became famous by this famous Navy SEAL called as Mark Divine. Mark Divine explain करते हैं box breathing ऐसे, like you start to deep inhalation for 5 seconds, you inhale for 5 seconds, you hold for 5 seconds, you exhale for 5 seconds, and then you again hold for 5 seconds.
You inhale for 5 seconds, you hold for 5 seconds, you exhale for 5 seconds, and again you hold for 5 seconds. This is the box breathing technique. Practice this whenever you are like really feeling fearful, जब भी आप टेंशन में हो, जब भी नर्वसनेस है, जब मे भी कोई जॉब इंटरव्यू में आप जाना चाहते हो, एग्जाम के पहले समझो यू आर फीलिंग लाइक आई एम ब्लैंकिंग आउट, मे बी यू आर फीलिंग लाइक पब्लिक स्पीकिंग कुछ करना है, किसी के सामने प्रेजेंटेशन करना है, एट दैट टाइम यू हैविंग दैट पर्टिकुलर फियर, उस समय आप ये बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक ट्राई करिए एंड रियली स्टार्ट टू फील योरसेल्फ कूल, काम, कंपोज्ड. इट विल गिव यू द डिसिप्लिन टू रियली मूव फॉरवर्ड विद फोकस एंड गेट द रिजल्ट्स. तो ये थर्ड टेक्निक हुई, विच इज द बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक. द फोर्थ टेक्निक, अवॉइड रैशनलाइजिंग. ये चीज आप डेफिनेटली करते हो कि आज तो चीट डे मेरा यार, अरे आज तो त्यौहार है, आज तो दिवाली है, आज तो होली है, आज तो चलेगी चॉकलेट, आज तो मिठाई आने दो यार, अरे आज तो ड्रिंक आने दो, आज तो दोस्तों के साथ मिल बैठे चार यार, आज तो आने दो भाई, आने दो. Cheat days, avoid rationalizing. Cheat days can actually kill your discipline. कि यार एक दिन किया, फिर आपको पता है सेकंड दिन भी करने वाले हो, थर्ड दिन भी करने वाले हो, फोर्थ दिन भी करने वाले हो, और वो चलते जाने वाले हैं. सो अवॉइड रैशनलाइजिंग. सी व्हेन वी रैशनलाइज, बॉब प्रॉक्टर सेज, व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन इज रैशनिंग lies to your mind. आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो. So avoid rationalization. Be disciplined, be focused. Do not go on those cheat days because you know we cheat ourselves too much, and that's where we kill our discipline. And the fifth technique, flex your uncomfortable muscle. आपका जो अनकंफर्टनेस का जोन है उसको बढ़ाते रहिए. एवरी सिंगल डे डू समथिंग वेर यू फील अनकंफर्टेबल. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए. सी बीइंग डिसिप्लिन इज नॉट ईजी. इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट दैट सेल्फ डिसिप्लिन, आपको अनकंफर्टनेस फील करनी पड़ेगी कि आज मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, आज ये चीज नहीं करूंगा. इट इज अनकंफर्टेबल. सो बीइंग डिसिप्लिन इज नॉट कंफर्टेबल. इट्स नॉट फॉर द पीपल हु वांट टू बी इन द कंफर्ट जोन. If you want to get that discipline, that real self-discipline, you have to practice uncomfortness. आपको आपके uncomfortable muscle को बहुत strong करना पड़ेगा. इसके लिए एक बेहतरीन सा TEDx speech है by a person called as Jia Jiang. Jia Jiang followed this practice of feeling uncomfortable for a day, for 100 days at a stretch. Watch that particular TEDx talk. It's a very humorous talk where he goes to maybe to ask for donuts, and he says, I want 5 donuts combined together like an Olympic ring, and he gets that. He asks money from a cop on the road, and he gets that particular money. But every day he was practicing uncomfortable. So maybe a simple technique like having a cold shower in the morning. You feel uncomfortable. But that's where you really start to get that feeling of discipline. Okay, I'm ready to push myself harder. I'm ready to go to that extreme level to become disciplined in life. Practice what suits you, but practicing your uncomfortable muscle is definitely going to help you become disciplined in life. तो रोजाना ऐसी कुछ चीज डेफिनेटली करिए जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. This is the fifth tip which can help you to become disciplined in life. Discipline, ये एक क्वालिटी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, it can become a game changer. This could be the razor's edge, the distinction between winners and losers. See, India has got talent. आपके पास बहुत नॉलेज है, लोगों के पास बहुत नॉलेज होता है, but everybody cannot become a success because they do not have this quality of discipline. अगर आप डिसिप्लिन बन गए, you go to that extreme level of extreme self-discipline, you could be the winner in life. This could be the only thing. एक छोटी सी razor's edge का difference can make you a difference between a success and a failure. When you start to apply what you know, get this practice of discipline, apply these 5 techniques, type in the comment box कि कौन सी टेक्निक आपको पसंद आई, कौन सी टेक्निक आप अप्लाई करना चाहते हो, and also type in the comment box कि और कौन से वीडियोस आप देखना चाहेंगे. I am there to help you, to serve you. Get that discipline. I think India has got talent. Let's work on that. India has got discipline, and if India has got discipline, we are going to be world beaters for sure. If you have liked this particular video, press the like button, share this particular video, subscribe to our channel. Let's get ready to think and grow rich. I am Sidharth Shah. Let's get ready to think and grow rich. Bye-bye.